Hello, dear friends. Today we are going to learn planning, preparing, and making a presentation. Myself, Sudarshan Patil, and we are in a touch with this such a kind of teaching learning process. Hope you are enjoying it. So today we will learn how to plan, prepare, and how to deliver a presentation. See, dear friends, that communication is an inseparable part of our modern life. The basic function of communication is to impart the message. The effective communication between two or more than two persons can be possible through presentations. However, that requires skill of presentation. If you know the skill of presentation, your speech will be hold the attention of the your receiver, your listener. So it must be well planned, rehearsed, and it should be delivered with a good style. So speech and we can the skill of addresser to deliver message may play crucial role in this particular modern era. So to make your presentation effective, one must learn techniques and skills of this particular task. So today we will learn first of all how to prepare presentations. So there are actually four steps we should know. First step is thinking about the audience. Second is planning presentation. Third is notes and visual aids. And fourth is good slideshow design. So if we follow all these stages properly, then our presentation will become more professional and it will create impact on your receiver. If we well prepare and if we practice our presentation, it will give the confidence and courage. So the following guidelines offer advice on preparing presentation. Now let us see with first of all thinking about the audience. Thinking about audience. It means what? That one must analyze his audience. Actually, a presentation is an act of communication between the speaker and the audience, right? According to the needs and expectations of audience, the speaker should mold, should shape his speech so that it can suitable for the audience and it should be suitable for their knowledge, right? So first of all, ask question to yourself: who is my audience? Whether I'm delivering it for my colleague, for my classmates, for students, for researchers, for experts in the field, for business people, general people, or mixed people, right? So this is what first analyze your audience, right? If you analyze your audience, it will be easy for preparing your speech. Then consider the purpose. Means what is the purpose? That whether to just inform or to persuade something or for selling something, for teaching, or whether you want to tell a new idea, or whether you want to show the progress. Why you are giving this presentation? So you should have a proper purpose or objective of your presentation should be clear in your mind. Then when you are presenting something, it should be brief. It should not create a boredom due to lengthy information.
So this is also one important thing while thinking about the audience. Even think their age group, their interest. If you know the age group and the interest of the audience, then you can shape your speech accordingly. So this is first thinking about the audience. The next, second one is planning presentation. See, many times we go for a dinner or for a trip or for watching a movie or to visit the place of our relatives. So for such a small activities in our daily routine life, what we do? We do the planning. Planning means what to do, why to do, when to do, and how to do. Answer of all these questions means plan. So if you are giving a presentation, plan your presentation. Your presentation should have proper beginning, middle, and end, right? So actually, see friends, it is very difficult to take in elaborated information than listening. So therefore, it is very important that presentation has a clear structure so that your listener can easily understand it. In a 15 to 20 minutes presentation time, you will have time to make three or five, only 3 to 5 main points. You will have more impact if your points are easy, clear to understand, even in a simple language. Avoid jargon, technical language unnecessarily. Be relevant to the topic and relevant to the context. Do not get deviated, distracted meanwhile, and direct to hold the attention of and direct to hold the attention of the listener. Means what is the prime motive of your presentation? That the audience should not get distracted or deviated. You are delivering the presentation, you are talking on a certain slide, and when you are maintaining eye contact, if you found that the audience is not listening your presentations, and then what is the use of your that presentation, right? So avoid everything that can deviate or distract your presentation. Got it? So we'll start with first point, beginning. So it is rightly said that well beginning is half done. So start your beginning with a you can start your presentation with a quote or some anecdote or some Sanskrit verse or some good thought which is related with topic, so that the attention of the audience can be grasped from the beginning itself, right? And of course, introduce yourself in a professional manner. Do not give unnecessary details. Just your introduction should be short. Then outline the aims of your talk, means tell the purpose, what you are going to cover in this presentation, means tell the scope of your presentation, right? So this you have to focus, that well beginning, introduce yourself, and the scope of presentation. In addition, you can start to grasp the attention of your audience with a picture or a everyday example or some questions, right? Or a stanza from a poem, so that from the beginning itself, the audience will be with you. So this is what well beginning is happened. Then second point, what is that? Middle. In this, you are going to elaborate your ideas logically. In the middle part, whatever you have said in the beginning, it must be percolated with a different threads of ideas, your thoughts with a different examples. However, points should lead logically from each other. Do not jump from here and there. You have to thread your speech, thread your ideas logically. Do not just hitting around the bush. You have to focus on the ideas clearly and you have to explain it, elaborate it logically.
What does the audience need to know first in order to understand your subject? Means create background, uh, create some stage of understanding. Don't touch the introduction and just go ahead. Avoid all such a kind of things. Understand what your audience need to know, what evidence will use to support these points and convince the audience. Then have clear sections or headings to structure in the middle section and lead from one point to another point, right? So use proper kind of a slides, proper examples, proper instances to elaborate your ideas. Okay, so this is about middle. Then next is end. End is also important aspect of your presentation. That end should be what we can say justified with a correct balance of positive and negative aspect of that particular concept. Then in the end, do not introduce any new information. First of all, you have to summarize the main points which you have covered in your presentation, so that the audience will get a review of your talk, right? So end positively with strong and strong concluding statements. Leave time for even question and answer. You can appeal to the audience that if you have any doubt, please ask the doubts. When even when an audience asks you the doubt, and if you fail to answer some questions, then don't get frustrated. That tell them frankly that I don't have this particular updated information. I will tell you afterwards, likewise. Or even you can appeal to that particular questioner that if you know the information, please share it. So this is what a professionalism you have to maintain, but don't tell any wrong information. What is the duty of the presenter? That if he knows, then present it properly. If the presenter doesn't know, accept it, that I don't, and tell frankly that I don't have this particular question's answer, right? So this is all about the third point, end. So end your presentation by adding even thank you slide, and even you can write your mobile number and email ID so that the audience can contact with you in the future. And next one is notes and visual aids. See, dear friends, notes and visual aids. When you are delivering your presentation, you can carry some notes in your hand. Even when you are preparing for each slide, prepare a small talk and rehearse it, practice it. So when the slide will be there on the screen, you can easily deliver that particular talk, or you can elaborate that idea if you will have a points in your hand. Don't read it aloud, because what will happen if you start reading the points, then the audience will lose the interest. Audience is not there that how you read those points. Audience is there how you elaborate it, how you explain it. They are there to grasp your ideas through your logical explanation. They are not there for to see how you read those ideas. So for this, you can carry some cards or notes in your hand. Why to carry such as some notes in your notes in hand? So that we cannot go out of our plan. Whatever you have planned, what is the scope of our presentation, to stick up to that particular plan, to stick up to the scope of our presentation, we need to carry such a notes in our hand. But one
once again, I am telling you, very important rule, that don't read your notes. Otherwise, your audience will lose the interest. Use headings and keywords to remind the main points and their order. Then means highlight, use headings and keywords so that it will be easy to remind. Less is more. You want to be able to read them quickly at a glance. Means when you are carrying the notes, less is more. Means you just have some important points that should be written in a bold so that in a single glance you can grasp it and you can explain it. Then note down things you definitely don't want to get wrong, names, dates, etc. This is important thing, that we cannot keep everything. Can we store all the things in our memory? No, it's very difficult. Some people can say, yes, I can keep it, but it will be very difficult to recall all the time, whatever we have read, whatever we have by heart. Sometimes we cannot recall it. Sometimes it happens even in examination also. You are you come to the a particular question, you have read that particular concept for many times, you have by hearted that particular definition, you know everything, but you cannot able to recall at the time of examination. This happens, and this happens to everybody. So we cannot recall each and everything. So for this, in a presentation is a very professional, what we can say, activity. So when you are talking in the presentation, and if you want to avoid the mistake of certain dates, names, figures, so for that, write down these names, dates, figures into the bold point and read it. So that you can give the exact and accurate, authentic information to your audience. Then the last point, that is good slideshow design. See how the first one, the slide should be explicit and easy to understand. Slide should not be ambiguous. It should be very clear. The audience, common audience, everybody, if you are delivering a presentation to your classmate, everyone should understand. It should be in the easiest manner. Be prepared. Then it should not be complicated with the complex graphics, maps, and charts, but on the other hand, it should be easy to grasp. Then avoid all complex graphics, maps, charts, tables, figures, so that your audience should lose the interest. What audience wants? Audience want what? Easy information. They want easy to dilute all the things. If you provide them complicated information, complex information, if you are providing the continuous graphics, maps, charts, comparison, what will happen? They will lose the interest. So keep it easy, right? Then many times, third point, many times it happens that the presenter is confident enough about the data he's printing, but he has certain limitations with presentation abilities. So this is also important, that presenter is confident enough about the data he has, his printing, but he has certain limitations with presentation abilities. So repeat, do the rehearsal, do the mirror rehearsal. Even you can record it on your mobile so that you can surmount on your hurdles. You can surmount on the barriers of presentation. Then fourth, illiteracy of computer technology may embrace you in front of the audience, that lead you towards the bad impression. Again, it is essential that if you are using, of course, you are going to use the laptop and computer for presentation. So you must know all the things about the laptop. If you are having some problems to use certain keys, certain features of the laptop or the computer, take information so that you can avoid some mistakes in front of the audience. So be
proper computer techno savvy, computer savvy engineer, so that you should not get or you should not face any problem in the future. Nowadays, computer has become an essential part of a human life. We must know how to use it, and that should be proficiently. We must have 100% skill of using computer. The next, you must aware, fifth point, about the graphical and aesthetic appearance of your slides. Means how our slide look, that matters a lot. What is its graphical and aesthetic appearance? See, when we are going for any ceremony or any function, what we do, we see ourselves in the mirror, how we look, right? In the same manner, you have to think about the appearance of your slide. So as we prepare for ourselves for any function, in the same manner, when you are delivering the presentation, it is a professional function for you. So your slide should look proper, it should look professional, it should have proper aesthetic appearance and proper graphical appearance. Then you must avoid the distracting backgrounds. There are some features of PowerPoint presentation that can distract or deviate the audience sometimes. So when you are doing a professional presentation, or when you are giving a presentation for educational purposes, so avoid that distracting and deviating backgrounds. It should be simple. Do not give extra effects to your PPT, so that audience will look at to the only effects of the PPT, and they will get distracted and they will ignore your talk. And color combination should be appropriate and relevant. Don't use gaudy color, which can give trouble to the eyes of audience. Your slide should look soft to the eyes of the audience. And use the proper fonts. The font size should be visible to the everyone. So font is also essential. Use proper fonts. Use visible size fonts. Then use the pointer for creating professional attitude. Means when you are giving or explaining any particular slide, and in that slide, if there is a diagram and you want to show the exact location of something, then use the pointer. Or if you want to highlight a certain sentence, or if you want to read it aloud, so use that pointer. It shows your professional attitude. Got it? So this is all about how to design slideshow. These are the 8 points. Go through it properly, read it 2-3 times at home also. So today we have learned planning, preparing, and making a presentation. And there are actually 4 steps involved in it. First of all, of course, the thinking about the audience, analyzing the audience, then planning presentation, what to do, why to do, when to do, and how to do. That is planning. Then notes and visual aids. Notes and visual aids are essential. And good slideshow design. How to design a slide. Each slide, that aesthetic, font size, that matters a lot when you are giving any formal presentation. So these steps are very essential whenever in future you are going to do PPT. Go through these particular 4 points.
so that it will be easy for you to give a your presentation successfully. Now I'm going to show you one video which is available on the YouTube. In that you can see how the PPT is prepared. There are certain tools with the help of that we can design proper PPT. Let us watch that particular video. The video courtesy of this particular how to create a PowerPoint presentation is by Study Span. Let us watch this video. नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट, फिर यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 जस्ट क्लिक करेंगे और उसके साथ ही पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया पावर पॉइंट ओपन। आपको भी यहाँ पे पावर पॉइंट कुछ ऑप्शन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए पावर पॉइंट में जो पेज होता है, इन पेज को बोलते हैं स्लाइड। ये जो है ये है स्लाइड। ठीक है, इसको आप ऐड, डिलीट या फिर इसका जो लेआउट है इसको चेंज भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा होम टैब में, और होम टैब में यहाँ पे देखिए स्लाइड, न्यू स्लाइड नाम का एक ऑप्शन है, जहाँ पे क्लिक करने के साथ ही नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। आप जितना मर्जी स्लाइड यहाँ पे ऐड कर सकते हो न्यू स्लाइड बटन में क्लिक करके। अभी देखिए यहाँ पे जो पहला वाला स्लाइड है उसका जो लेआउट है थोड़ा सा अलग है, और दूसरा जो स्लाइड है उसका लेआउट अलग है। तो हम यहाँ पे लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमको जाना होगा होम टैब से। यहाँ पे देखिए स्लाइड ग्रुप का ऑप्शन है। स्लाइड ग्रुप में यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ब्लैंक चूज कर लेना है। आपके जरूरत के अनुसार आप कोई भी लेआउट स्लाइड का वहां से चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लैंक किया क्योंकि ये जो फॉन्ट पेज है ये मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज करके यहाँ पे बनाऊंगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स का बटन है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेलकम। फिर एक नया टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और इसमें लिखेंगे टू, और नीचे और एक लेंगे उसमें लिखेंगे दार्जिलिंग। मतलब हमारा जो फॉन्ट पेज होगा वो होगा वेलकम टू दार्जिलिंग। अब मैं तीनों टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और उनका फॉन्ट साइज, कलर ये थोड़ा चेंज करूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करेंगे। आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल यहाँ से ले सकते हो जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट फॉन्ट यूज करूंगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ये मैंने ले लिया। अभी इनका जो साइज है इनको थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज करूंगा और इनको थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा। आप यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके उसका जो बॉर्डर है वहां पे क्लिक करके उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इस पेज का एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करूंगा। इसके लिए हमको जाना होगा डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब से हम क्लिक करेंगे बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन में, बैकग्राउंड स्टाइल। जैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही फॉर्मेट बैकग्राउंड का विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, सॉलिड फील्ड, ग्रेडियंट फील्ड, पिक्चर एंड टेक्सचर फील्ड। पिक्चर एंड टेक्सचर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइल में जाना पड़ेगा, और फाइल में क्लिक करने के बाद आप कोई भी इमेज जो आप बैकग्राउंड में देना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना के रखा है दार्जिलिंग नाम से, जहाँ पे मेरा बैकग्राउंड इमेज है। यहाँ से देखिए मैंने इसको ओपन किया। अभी एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे मैं चूज करूंगा ये वाला, और जस्ट इंसर्ट में जाके एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के साथ ही ये फोटो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अभी फॉर्मेट बैकग्राउंड विंडो को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब मैं यहाँ पे इन तीन टेक्स्ट
बॉक्स को थोड़ा एडजस्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए आप प्रेस करेंगे CTRL A, ठीक है। तो ये देखिए मेरा एडजस्ट करना हो गया। अभी हम स्लाइड नंबर 2 में जाएंगे। इसका भी सेम होम टैब से हम लेआउट को ब्लैंक कर लेंगे। अब हम ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे हम लिखेंगे टॉप 5 प्लेसेस इन दार्जिलिंग। मैंने यहाँ पे टॉप 5 प्लेसेस इन दार्जिलिंग के ऊपर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेटा ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है इंटरनेट से। ये देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिया है टाइगर हिल, बाताशिया लूप, ऐसे करके मैंने 5 प्लेसेस का यहाँ पे डिटेल्स मैंने कलेक्ट किया है इंटरनेट से और इन्हीं डेटा को यूज करके हम अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइगर हिल है, तो हम टॉप 5 प्लेसेस में फॉर्मेट में जाके यहाँ पे एक पहले टेक्स्ट बॉक्स सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक बुलेट स्टाइल लेंगे, बुलेट स्टाइल। तो बुलेट स्टाइल अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे एक एक करके 5 प्लेसेस का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टाइगर हिल, फिर एंटर करके नीचे आएंगे और लिखेंगे बाताशिया लूप। ऐसे करके टोटल 5 प्लेसेस का नाम हम 1 बाय 1 यहाँ पे लिखेंगे। अभी इनको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बॉर्डर पे क्लिक करके इसको थोड़ा राइट साइड में लेके आएंगे। अभी इनका सिलेक्ट करके हम थोड़ा फॉन्ट स्टाइल और कलर को चेंज करेंगे। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने फॉन्ट चेंज किया फिर साइज को इंक्रीज किया और अभी यहाँ से उसका एडजस्ट करके आप उसका कलर चेंज करेंगे। तो ये उसका टेक्स्ट कलर मतलब फॉन्ट कलर, यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हो। ये हो गया। अभी इनको सिलेक्ट करके इनका भी फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज इनको थोड़ा चेंज कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डेकोरेशन के लिए ऊपर एक लाइन यूज करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट और यहाँ से शेप में जाके क्लिक करके लाइन को चूज कर देंगे और ये लाइन को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और इसका अभी हम एक कलर ले लेंगे फॉर्मेट से। फॉर्मेट टैब से आप देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर को चूज किया। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। आप कोई भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो जो आपको पसंद हो। अब मैं इस स्लाइड में एक बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करूंगा और इसके लिए हम जाएंगे डिजाइन टैब। डिजाइन टैब से बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड में, फिर पिक्चर फिल, उसके बाद फाइल में क्लिक करेंगे और इमेज चूज करके इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद विंडो को क्लोज कर देंगे। अब इन टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर देंगे ताकि थोड़ा हाईलाइटेड दिखे और इनको भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड का काम स्टार्ट करूंगा जिसमें मैं लूंगा टाइगर हिल। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इसको कॉपी कर लेंगे, CTRL-C प्रेस करके, और अब मैं थर्ड स्लाइड का लेआउट को ब्लैंक कर लूंगा और ऊपर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके वो टाइगर हिल को यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे CTRL-V प्रेस करके। अभी इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, कलर, इसका साइज थोड़ा चेंज करके इसको एडजस्ट करेंगे। इसको एकदम टॉप पे रखेंगे। अब मैं यहाँ पे टाइगर हिल का एक पिक्चर इंसर्ट करूंगा। इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब, इंसर्ट से यहाँ पे पिक्चर में जाके क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ फोटो यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, तो यहाँ से मैं एक फोटो चूज करूंगा और इंसर्ट में जाके क्लिक करने के साथ ही वो फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। फिर इस फोटो को थोड़ा साइज में छोटा करके इसको सेट करेंगे। अब मैं नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करूंगा और जहाँ पे मैं टाइगर हिल के बारे में कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करूंगा। तो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक किया और इसको यहाँ पे ड्रॉ किया। अब मैं चला जाऊंगा मेरे वर्ड फाइल में जहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइगर हिल के बारे में कुछ डिटेल्स कलेक्ट करके रखा है। इनको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे CTRL-C फॉर कॉपी और यहाँ पे आके CTRL-V करेंगे फॉर पेस्ट। अब इन टेक्स्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे और इसके साथ ही इनका फॉन्ट स्टाइल, साइज थोड़ा चेंज कर लेंगे। अब इनका टेक्स्ट अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर लेंगे और इनका कलर भी चेंज कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइगर हिल का जो स्लाइड है इसको डिजाइन किया,
आप सेम प्रोसेस यूज करके बाकी 4 जो स्लाइड है उनको भी डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा देखिए, मैंने बाकी 4 स्लाइड को भी डिजाइन किया एकदम सेम ही प्रोसेस यूज करके। ठीक है, तो ये देखिए मेरे प्रोजेक्ट का फॉन्ट स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड। यहाँ पे देखिए मैंने जो प्लेसेस का नाम लिखा है इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। और ऊपर जो मैंने लिखा है टॉप 5 प्लेसेस इन दार्जिलिंग, इनको थोड़ा बड़ा करेंगे और इनका जो कलर है इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। और यहाँ पे जो मैंने लाइन शेप लिया है इसको भी थोड़ा छोटा करके एडजस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे जो इमेज है इसको थोड़ा डेकोरेट करूंगा। इसके लिए इमेज को सिलेक्ट करके हम जाएंगे फॉर्मेट टैब और यहाँ से देखिए इमेज का बहुत सारे स्टाइल है, तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल में क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्टाइल, जो बहुत सारे स्टाइल है यहाँ पे, जो आपको पसंद हो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगा तो ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। मैं सारे स्लाइड में ही ये वाला स्टाइल ही अप्लाई करूंगा। जैसे मैं बाताशिया लुक का भी सेम अप्लाई करूंगा, फॉर्मेट से सेम ही पिक्चर का फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करूंगा। जितने भी स्लाइड है सारे में। अब मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करके एक नया स्लाइड इंसर्ट करूंगा और एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके वहां पे मैं लिखूंगा थैंक यू। अब इसको सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, कलर, इनको चेंज करेंगे। अभी ये वाला बटन से हम क्लिक करके इसको थोड़ा रोटेट करेंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और इसका साइज को अभी थोड़ा बड़ा करके इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करके एक कलर चूज कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट मेरा डिजाइन जो है वो सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे थीम अप्लाई करूंगा। थीम अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा डिजाइन टैब में और यहाँ पे थीम्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे थीम है। जो थीम आपको पसंद है जस्ट उसमें आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही वो थीम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई भी थीम यहाँ से अप्लाई कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब मैं यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपको जाना होगा एनिमेशन टैब में। एनिमेशन टैब में यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनिमेशन स्टाइल है। जो एनिमेशन स्टाइल आपको पसंद हो वो एनिमेशन स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये वाला स्टाइल में क्लिक किया, ये स्टाइल का इफेक्ट देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया और यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन स्पीड, इसको हर वक्त आपको स्लो रखना है। स्लो रखने से एनिमेशन का जो प्रीव्यू है वो आपको क्लियरली दिखेगा। तो सेम प्रोसेस यूज करके आप बाकी सारे स्लाइड में भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि स्लाइड ट्रांजिशन जो आपको पसंद हो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बाकी सारे स्लाइड में भी सेम प्रोसेस यूज करके एनिमेशन अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट एनिमेशन अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको किसी भी टेक्स्ट में जाके क्लिक करना है। उसके बाद हम जाएंगे कस्टम एनिमेशन में। कस्टम एनिमेशन ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही राइट साइड में कस्टम एनिमेशन का विंडो ओपन होगा। यहाँ से ऐड इफेक्ट में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे और ये सारे ही एनिमेशन है। यहाँ से हम एंट्रेंस में जाएंगे और मोर इफेक्ट में जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनिमेशन के नेम यहाँ पे आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे कोई भी एनिमेशन में क्लिक कीजिए, उसका प्रीव्यू आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। जस्ट सिंपली आप ओके करेंगे तो ओके करने के साथ ही वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर हम 2 में क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस यूज करके 2 में भी हम सेट करेंगे एनिमेशन को। उसके बाद हम दार्जिलिंग में क्लिक करेंगे एंट्रेंस और यहाँ से कोई भी एनिमेशन में क्लिक करके उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो सेम प्रोसेस फॉलो करके आप बाकी स्लाइड में भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से दिखा रहा हूँ एंट्रेंस, ये देखिए मोर इफेक्ट। जो एनिमेशन आपको पसंद हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो।
मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया। अभी लास्ट जो स्लाइड है इसमें भी एनिमेशन ऐड करेंगे, तो सेम प्रोसेस यूज करके आप यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन ऐड का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कस्टम एनिमेशन का जो विंडो है इसको यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन एक बार रन करके दिखाऊंगा। इसके लिए हमको जाना होगा स्लाइड शो टैब में और उसके अंदर से फ्रॉम बिगिनिंग में क्लिक करना है और आप कीबोर्ड से F5 की भी प्रेस कर सकते हो। क्लिक करने के साथ ही आपका प्रेजेंटेशन रन हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन में जो आपने एनिमेशन दिया है वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, आपको कोई ना कोई की प्रेस करना है। मैं यहाँ पे स्पेस की यूज करके स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ। ये हो गया मेरा प्रेजेंटेशन। अब मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन में कैसे टाइम सेट करते हैं उसका प्रोसेस दिखाऊंगा। इससे आप बिना किसी की को प्रेस करके ही आपको प्रेजेंटेशन में स्लाइड को चेंज कर सकेंगे। तो इसके लिए हमको जाना होगा स्लाइड शो टैब और यहाँ से देखिए रीहियर्स टाइमिंग नाम का एक ऑप्शन है, रीहियर्स टाइमिंग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही प्रेजेंटेशन मेरा रन होगा और यहाँ पे टाइम आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप किसी भी की को प्रेस करके आपके प्रेजेंटेशन का टाइम आप यहाँ पे सेट करेंगे। अब यहाँ पे यस में आके एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको दिखाएगा कौन से स्लाइड में कितना टाइम यूज हुआ है। तो आप अभी नॉर्मल मोड में जाने के लिए किसी भी स्लाइड में डबल क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं कीबोर्ड से F5 की प्रेस करूंगा। प्रेस करने के साथ ही मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो रन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्लाइड वन बाय वन यहाँ पे प्रीव्यू होता रहेगा।
thank you very much to StudySpan YouTube channel. I shared this video from StudySpan YouTube channel. Thank you once again. So dear friends, today we have learned in detail how to plan, prepare and making a presentation. And in this particular concept, we learn 4 main points. That is first thinking about audience, then planning presentation, notes and visual aids, and good slideshow design. I have shown you one video from YouTube. In that, you might have learned in detail how to design slide show. So even in our practical session, you have to prepare one PPT. Hope you have understood this particular point from our curriculum. And thank you very much. Let us stop here.